In this class, now we study about NumPy pandas. First, we import NumPy as NP, import pandas as PD from scale.model selection import train / split. We fetch a file of e-commerce CSV. क्या करेंगे इसमें हमको ये करना है कि हम एक फाइल को फैच करेंगे इस डाटा को और उसमें से हम उसकी एक्यूरेंसी को देखेंगे कि टेस्ट और ट्रेन की कितनी एक्यूरेंसी आ रही है लेमडा से जो कि फॉर एग्जांपल द इक्वेशन ऑफ मैथ इज y is equal to mx plus c where c is the constant and m is the slope but y is directly proportional to m. So here m is changed, then y is also changed. So now x is equal to df average session length time on app, time on website. This data is given in this data set. Email address, average session length, time on app, time on website, length. But now you know that the matrix is we take 4 by 4 matrix. X is equal to df average session length, time on app, time on website, length of members X, and Y is equal to yearly time spent. So what is the means of this? We can now tell you. The X in this, the X is a pandas of data frame containing the input features used for the machine learning model. द मॉडल फ्रेम इज क्रिएटेड फ्रॉम डीएफ. हम यहाँ एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है डीएफ. डीएफ इज इक्वल टू डाटा फ्रेम बाय द सिलेक्शन ऑफ द कॉलम्स, जिसमें से कि हम कुछ कॉलम्स का सिलेक्शन कर रहे हैं जैसे एवरेज है, सेशन लेंथ है, टाइम ऑन ऐप है, टाइम ऑन वेबसाइट, लेंथ ऑफ मेंबर्स. ये हमारे कुछ कॉलम्स हैं यूजिंग बाय डबल स्क्वायर ब्रैकेट. यहाँ पर आप हमने डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है. कॉलम्स आर लाइकली टू बी द फीचर्स दैट मशीन लर्निंग मॉडल विल बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द टारगेट वेरिएबल. अब यहाँ नाउ वी आर स्टडी अबाउट व्हाट इज वाई in here in a data set. Y is also pandas. We know that y x is also a pandas data frame and y is also a data frame, pandas data frame, but it is containing the target variable that machine learning will be try predict the data frame is created from the df data frame selection yearly amount spent column double square bracket. Overall the coding is selection relevant columns the df data frame and creating two new data frames x and y to be used input machine learning models. इसका मतलब ये है कि इससे हम जो एवरेज सेशन है, टाइम ऑन ऐप है, टाइम ऑन वेबसाइट है, ये x इज इक्वल टू डी एफ एंड y इज इक्वल टू ईयरली टाइम स्पेंड. अब हम क्या करेंगे जो एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट X train and X test, Y train and Y test. So what is X train, X test, Y train, Y test? Now we can about this. The code of X train, X test, Y train, Y test is equal to this is the code. This is the code where X and Y test size is equal to 100, random state 10,
uses the train test split function from the scale-learn.model selections modules, split the data into the training and testing sets for machine learning. The input data x and y passes as a first two argument. इसमें क्या है कि जो x and y जो इसमें x ट्रेन और y ट्रेन है ना, इसमें x and y passes as the first two argument to which the train test split function and test size split function. We know that x हमारा किस किस के लिए लगेगा, x एक तो हमारा ट्रेन के लिए, एक हमारा टेस्ट के लिए दो फंक्शन दे रखे हैं, जिसमें कि टेस्ट का साइज कितना दे रखा है हमने, इसमें टेस्ट का साइज 100 दे रखा है, which means that 100 samples will be used for testing and remaining samples will be used for training. In this question, test we are testing about the size of 100 and we are testing about the size of 100 and remaining parameter of sets is 10, which ensure the random splitting is reproducible, meanings that if you run the code multiple times will be same parameter, you will be get the same split. इससे क्या होगा, इससे कि हम इसकी एक्यूरेंसी को फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमको एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, एक्स ट्रेन size 100, random state size 10. X train splits function returns to the object assigns to the variable x train, x test, y train, y test. These variables correspond to the training and testing subset input, which are randomly split the parameter train test split function. So we know that the formula of finding to accuracy of x train, x test, y train, y test is equal to b. B is equal to X transpose. B is equal to X transpose into X plus lambda ब्रैकेट इनवर्स, इनवर्स का मतलब है ब्रैकेट के ऊपर पावर -1 इंटू वाई इंटू एक्स का क्या ट्रांसपोज, ये फॉर दिस इज द फॉर्मूला वेयर लैम्डा the value is dependent upon lambda. Now we change the value of lambda 1 0.001 0.008. So here b is equal to np dot bracket np dot, first copy this, paste. The code of the computer coefficient linear regression model using the rigid regressions with the regularization parameter lambda. X is the NumPy array that containing the input features of data and Y is the NumPy array that contain the target variable that np dot function it is used to perform the matrix multiple to calculate the intermediate in the rigid regression formula. X slash T transpose X array. X is the correct order, np dot inverse computers inverse of the matrix result from the sum of the x dot t and x multiplied by lambda times of the identity matrix of size x dot shape 1. Identity matrix of size x dot shape 1 is created using to np dot identity function. इसका मतलब क्या है कि ये एक फॉर्मूला दे रखा है, हम इससे क्या करेंगे कि b इज इक्वल टू np डॉट np इनवर्स है, ये आपका np डॉट एक्स डॉट टी, एक्स डॉट टी का मतलब है एक्स का ट्रांसपोज प्लस लैम्डा डॉट np डॉट आइडेंटिटी एक्स से np डॉट एक्स का ट्रांसपोज कॉमा वाई.
जिससे कि ये वैल्यू आपकी निकल आएगी। एक एरे निकल आएगा 4 11.86 34.67 माइनस की 14.12 16.3005। अब आइए प्रीडिक्शन फॉर ट्रेनिंग डाटा। अब हम इसका प्रीडिक्शन करेंगे ट्रेनिंग डाटा का। सबसे पहले हमको इसमें मीन स्क्वायर एरर निकालना है। फिर मीन स्क्वायर एरर को जब हम निकालेंगे फिर आर टू स्कोर से हम इसको कंपेयर करेंगे आर टू स्कोर, जिससे कि इसमें एक्यूरेंसी का पता चलेगा कि उसकी एक्यूरेंसी क्या है। तो टेस्ट स्लैश प्रिंट इज इक्वल टू np डॉट एक्स स्लैश टेस्ट पैकेज बी टेस्ट प्रिंट। इससे कि ये यहाँ से निकल आया मीन स्क्वायर एरर वाई स्लैश टेस्ट MSQ MSE निकालेंगे। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, इसका MSE मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर किस पे निकालेंगे, वाई टेस्ट कॉमा टेस्ट प्रिंट। और अगर हम इसका मीन स्क्वायर एरर हम इसका एक्स ट्रेन पर भी निकाल सकते हैं, एक्स टेस्ट पर भी निकाल सकते हैं हम इसका मीन स्क्वायर एरर। इसमें कि हमको कॉपी किया पेस्ट किया, यहाँ पर आपको कुछ नहीं होगा, एक्स आर टू स्कोर वाई स्लैश टेस्ट टेस्ट प्रिंट। इसमें कि हमने इसका स्कोर निकाल लिया, जिसका स्कोर है 93, 0 मतलब 93%। इसको अगर हम इसमें लूप लगाएं, लूप हमको किस लिए लगाना है, लूप हमको इसलिए लगाना है क्योंकि एक्यूरेंसी, इसकी एक्यूरेंसी एक उस मेथड में आनी चाहिए जिस मेथड में आपका 90 से एबव, जिसमें कि लैम्डा की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए और एक्यूरेंसी भी उसी तरीके से आनी चाहिए। ओवर फिटिंग की कंडीशन, अंडर फिटिंग की कंडीशन, ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद, जैसे कि मैंने मान लिया लैम्डा, मैंने को एक लैम्डा की वैल्यू मानता हूँ मैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू मैंने 100 मान लिया, 10 मान लिया, 1 मैंने ये लैम्डा की वैल्यू मान ली, जिसमें कि एक एक्यूरेंसी आएगी। मैंने लूप चलाया फॉर ट्रेन ए सी सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ट्रेन स्लैश ए सी सी इज इक्वल टू ये फॉर लैम एंड लैम्डा बी इज इक्वल टू एन पी डॉट लाइन डॉट इनवर्स, ये वही आपका फॉर्मूला है जो यहाँ था, मैंने आपको बताया अभी, ये वाला। ये हमने एक लूप चलाया, ए इज इक्वल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा ट्रेनिंग, ये हमने कोई नाम दे दिए इसको, अपनी तरफ से आप कुछ भी रख सकते हैं अगर। तो यहाँ पर एक डाटा सेट आ जाएगा। डाटा सेट आने के बाद जिसकी एक्यूरेंसी को अगर हमको चेक करना है तो हम एक प्लॉट कर सकते हैं फ्रॉम मैट प्लॉट लिव इम्पोर्ट पी वाई पी एल डी एस पी एल टी प्लॉट रिपोर्ट लैम्डा। इस तरीके से हम इसको इस पर प्लॉट कर सकते हैं, इस ग्राफ इस पर। इस क्लास में आपको मशीन लर्निंग की ये
फिफ्थ क्लास है।